Padmavati Jal's baby was born on January 19, 2010, her fourth child. In most families of her marginal farming community, it would bring joy, but also a degree of anxiety. One more mouth to feed, another child to raise. Unusually, in Padmavati and Pavitra's case, there was no trace of worry. Instead, there was contentment. It was a far cry from what seemed possible in 1997 when they got married. Pavitra owned only a bit of land. Depending on work as farm labourers, just about making ends meet. Together, they took a step that changed their life. They applied for a bank loan and bought a cow with the money. From the milk they got, they made khoa, which they sold to pay off the loan. पैसा मिलला के गाय संग संग किन्नु ना गाय किणी करी आमर घर भी चलला निजे लोग के नहीं दऊ गुरस बोइनु और निजे खुआ तैयारी करी करी आमे खुआटा बिकिनु आरु निजर परिवार उन्नति भी हैला आरु आमर ऋण भी आमे सुझी पारनु. Having repaid the loan, they took another and bought a second cow. With time, the cows bore calves. The cost of husk for feeding them increased. It wasn't as easy to pay off the loan for the second cow. But Padmavati and Pavitra were not afraid of risk. They pawned Padmavati's jewelry and bought a hulling machine. सेनु बसानु जे कुणा हैला चौल हैला के आमे ऋण भी बैंक रो सुझी पारनु आउ आमर घरर परिवार भी आमे सुख शांति रे आमके खाबा के भी अड़िया भी हैला गाय के भी कुणा मिलला आउ आमके पैसा भी हैला. They were on the road that put daughters Bimalabati and Pooja in class 7 and 2 and son Bhubaleshwar in class 5. The loan for the second cow was repaid. They had all the husk they needed, plus some to sell. And Padmavati's jewelry was back. Every evening, when Pavitra takes the day's khoa to the market, he brings back 100 rupees. Recognizing their enterprise, Walp started Padmavati in a new direction. She was trained in installing smokeless chullas, earthen stoves, and now trains other women to install them at home. Smokeless chullas are healthier, take less time, and burn less wood. She visits homes to install the chullas. Padmavati now has one more source of income, and she promotes a good cause. वर्तमान आमे स्मोकलेस चूल्हा रे रांधुछु बहुत सुख बहुत सुविधा अच्छे जे कम काठरे होचे भात तापर समय भी कम शीघ्र शीघ्र भात होचे तापर आमके धुआं भी नहीं हेबा ऊपर के धुआं पलौचे
आर जे रांधुचे ताके धुआं भी नहीं बाजबा बहुत सुविधा होचे देह प्रति बहुत सुविधा अच्छे Blackened over the years, but now smoke-free. ताकू आमर वाटरसेड तरफ विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग एवं एक्सपोजर एवं ता सहित किछि वैषयिक सहायता दिया जाइछि एवं किछि तार जो निजर फैमिली सस्टेनेबिलिटी की मेंटेन रखिया पई ताकू वेजिटेबल कल्टीवेशन स्मोकलेस चूल्हा एवं तथा जो आमर जो विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग तालीम कार्यक्रम तथा तार जो एसएचजी रे संपृक्ति आ एसएचजी माध्यम रे ताकू आरएफ दवाटा ये जिनस गुड़ाक ताकू बेटर ऊपर को नहीं पारी। In 2008, Walp helped Pavitra to build a well. He leased an acre of land to grow vegetables. आम गोटे कुंटाल को भी दिया बैगण दिया मंजिया मन को काली फिर गोटे कुंटाल दिया पर दिन गोटे कुंटाल आउ 3 दिन आमर बंद रहा तापर 4 दिन पर आउ तुला है से Life is enterprise for them, and they all pitched in for a new one, making incense sticks. Padmavati and Pavitra have ventured and they have gained. The children can look to a life Padmavati's mother couldn't have dreamt of. झील तो 8 पढ़ुची पो ए वर्ष 6 पढ़वा से मनकर लगी आके टिके बढ़ावा लगी आमर विचार अच्छे अरे पाठशाठ टिके अधिक पढ़ाले से माने भी आमर पढ़ा शिक्षित आमे तो मूर्ख लोग से माने टिके पाठ पढ़न आर शिक्षित थियन आर ऊपर के उठबे यार आमे मूर्ख हेनु बोले छुआ मन कार मूर्ख करमु के आज्ञा बुद्धि भी दरकार पैसा भी थिले भी किछि हेबो नै बुद्धि टिके खर्च करबार अछि पैसा रोजगार थिले भी मूड नहीं खटेले काम हेबो नै सा धंदा चलेबार अछि पैसा थिले भी जणे लोग करि नि पारे मूड थिले बुद्धि थिबा जणे को उधार मांगी तापर से सुझी पारबा।